क्या कमी है? All that time I forgot to turn on the ring light. कुछ कमी है, कोई मसला है, क्या है समझ नहीं आ रहा। बस दिमाग जब दो बातों में घुमा हो तो फिर ऐसा होता है। Everyone's life is not perfect, so when you are distracted about, let's get to the skincare and let's have a happy time. Okay. Assalamu alaikum beautifuls, how are you today? Do let me know in the comment section that how are you doing today. After a long time I'm being in front of the camera. उससे पहले सिर्फ vlogs ही share कर रही थी and yeah, lots of videos are coming up, so stay tuned for that. Anyhow, in today's video I'm gonna share with you my thoughts about this retinol serum, whole bottle of serum sheet mask. Is it worth buying? क्या serum अंदर से कैसा है, sheet mask का size, everything does matter. What is the price of the sheet mask? So if you're interested in that, let's on and on we'll go. I have used this mask and yeah, I have lots of things to talk about this mask and yeah, let me take off the scarf because every time I do this kind of stuff, the things get onto my scarf and it ruins them. So yeah. चलिए जी, अब बता देती हूँ आपको रेटिनॉल के फायदे। हमेशा शीट मास्क चूज करें that can give you a specific kind of benefit to your skin. Whitening, sheetening तो मतलब हो ही जाएगी ना, trust me. Choose a sheet mask that has a specific kind of ingredients into it that are you're doing to your skin. Don't know what I mean? Let me explain, or let me elaborate while I'm applying this mask. By the way, this mask is by Estelin. This is my first time trying this kind of mask, or it reduces fine lines, active fresh skin. Let's open this. Okay, from inside it is a regular kind of mask, जैसे सारे मास्क होते हैं sheet mask जैसे. And can I see extra serum? Can I see? Please let me see. Okay, there is few, not much. Okay, now what we're gonna do, we're gonna unfold. I have done my cleansing. मैंने पहले क्या कहते हैं उसको, मैंने डबल क्लिनजिंग की है. पहले मैंने वो लगाया है balm, then I applied the cleanser, then I scrubbed my face to get all the dark and dead skin off my face, and when I apply the sheet mask it can get deep penetrated into my skin. Now remember to always rub the sheet mask while it's in the packet. मास्क अप्लाई करने के बाद आपने इसकी क्रीसेस ज़रूर निकाल देनी है, क्योंकि जब तक शीट मास्क इवनली आपकी फेस पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा आपकी स्किन को बेनिफिट्स नहीं मिल सकेंगे. उसके बाद आपने स्किन को अच्छी तरह मसाज भी करना है शीट मास्क के ऊपर से, ताकि आपके पोर्स जो हैं वो थोड़े से खुल जाएं और जो प्रोडक्ट है वो स्किन के अंदर डीप चली जाए. उसके बाद अब मैं बताती हूँ आपको, रेटिनॉल इंक्रीजेस द स्किन सेल प्रोडक्शन. आपकी स्किन की अगर डैमेज हुई हुई है तो उसको रिपेयर करता है. इट हेल्प्स अनक्लॉग द पोर्स, आपके पोर्स को अनक्लॉग होने में हेल्प देता है. रेटिनॉल ऑल्सो एक्सफोलिएट्स योर स्किन एंड इंक्रीज द कोलेजन प्रोडक्शन, जिससे आपकी स्किन बहुत टाइट रहती है. ऑल्सो हेल्प टू प्लम योर स्किन एंड गिविंग योर स्किन अ फ्रेश एंड रिंकल फ्री लुक. स्किन पे आप कोई भी ट्रीटमेंट देंगे आपकी स्किन अच्छी ही लगेगी. इसलिए जरूरी है कि आपने किसी भी मेकअप से पहले स्किन को प्रेप अच्छी तरह जरूर करना. जब शीट मास्क आपको 20 मिनट्स हो जाए और यू टेक इट ऑफ, सो मैं आजकल क्या करने लगी हूँ, all that time I forgot to turn on the ring light. Let's get to the skincare and let's have a happy time. Okay, मैं आजकल क्या करी हूँ, after taking off the sheet mask, जितना absorb मेरी skin में उसने कर लिया, I apply this skin tightening mask by Ish Organics, और ये pores को basically tight करता है. Not much. I take a small amount of this mask and apply it. I do have a video on it. मैं इसको आई बटन पे लगा रही हूँ. ये क्या करता है, एक तो स्किन अगर आप मेकअप से पहले प्रेप कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको टाइटनिंग देगा, और अगर आपने स्किन केयर की है उसके बाद ये अप्लाई करेंगी तो भी ये आपकी स्किन को टाइटन करेगा. जो भी आपकी स्किन ने प्रोडक्ट जो है एब्जॉर्ब की है उसको रिस्टोर करेगा.
रिस्टोर नहीं करेगा उसको प्रिजर्व करेगा, ठीक है ना। और अब ये ड्राइंग मास्क तो है नहीं, तो ऑल आई नीड टू डू इज लीव इट ऑन फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स। व्हाई डू आई हैव लॉट्स ऑफ हेयर ऑन माय, आपके भी हेयर फॉल हो रहे हैं? Major hair fall these days. I'm trying a very good remedy I'm soon gonna share with you, so stay tuned and we're gonna deal with this together. Okay, after applying, after removing, not applying, after removing the sheet mask and the mud mask and the tightening mask, my skin feels so cold and it feels like tighten up. और वैसे भी अगर आप ठंडे पानी से मुंह धोएंगे तो आपका स्किन ऑटोमेटिकली टाइटन होती है। उसके बाद हमने अच्छा सा मॉइस्चराइजर ज़रूर फेस पे अप्लाई करना है। यहाँ मैं ओले का अप्लाई कर रही हूँ, दिस इज एज रिवाइंड नेचुरल वाइट है, और ज़रूर मॉइस्चराइजर एंड पे अप्लाई करना है। इससे आपकी जो स्किन बैरियर बन जाता है जो भी आपने ट्रीटमेंट की है। ऑल इन ऑल माई थॉट्स अबाउट दिस एस्टेलिन शीट मास्क, रेटिनॉल शीट मास्क, बेनिफिट्स तो आपने सुन लिए हैं। दिस पर्टिकुलर सीरम इसमें थोड़ा सा सीरम इसमें कम है, दे डज से दे हैव 25 ml इन इट विच इज़ bit less, थोड़ा सा कम है। ऑल इन ऑल द साइज ऑफ शीट मास्क एंड द प्रोडक्ट इज गुड, प्राइस भी इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट एंड गिव इट अ ट्राई। सो दिस इज़ वन ऑफ अ गुड मास्क, सो आई कैन रिकमेंड you guys, it's not that bad and it's is good. So yeah, this is my whole video. Hope you like my video. If you like, then don't forget to give it a thumbs up and subscribe to my channel. I will see you in my next video. Until then, take very good care of yourself and the loved ones around you. And before you leave, you can check out all the other sheet mask videos that I've shared before. And my hair is not in good condition, right? I don't know that. Anyhow, thanks for watching, guys. Allah Hafiz.